Just over 100 million, that is the tribal population of India. It's larger than that of any country in the world. However, despite the protection given to the tribal population, it remains the most backward group in India on the three most important indicators of development: health, education, and income. The USHA Silai School Progamme launched the tribal exclusive USHA Silai School project with the idea of supporting tribal women by helping them earn a better income. This initiative reaches out to women in the most marginalized parts of India, teaches them new skills, and provides them a platform for entrepreneurship so they can earn a living. The plan is to open 500 tribal exclusive USHA Silai schools across 29 districts in 9 states of India. 280 of these 500 schools are currently successfully operational. While these schools will work on specific requirements of women coming from tribal communities, it will ensure that all participating women across India are provided equal opportunities in skill generation and income development despite their cultural differences and extremities. Approaching the tribal women was a very challenging task because one, there is lack of trust, their receptivity in terms of strangers is extremely low, and there are challenges to cultural differences and language barriers. We could approach them because we partnered with NGOs who had been working with the tribal population for a long time, and they enjoyed this trust with the tribal women. And also I think the very fact that we were open and receptive to their culture, we did not try to change the basic ethos of the society, and therefore we were also welcomed. Sewing is something that all of them really wanted to learn, and we offered them that platform. And they have taken to Silai schools very well and have started their own setup. They are teaching others also how to stitch and sew, and are earning well. One of these initiatives is in Nicobar, where USHA International Limited has partnered with the Tribal Development Council or TDC. 10 new USHA Classical Silai schools have been opened in Nankauri in Nicobar district. The trainings were organized from 29 November till 7 December in the community hall in Kamorta. The women entrepreneurs belong to poor tribal communities and have been selected from different villages. 2 of the women have been selected from Campbell Bay, which is in Great Nicobar. And so, through this initiative, USHA is helping skill women in the southernmost part of India. Tribal women कोई भी तरह से पीछे नहीं है. This is the Longding district tucked away in eastern Arunachal Pradesh. Where the sun's rays hit India first, well before the rest of the country wakes up. These hills are home to the Wanchos, one of Arunachal's indigenous tribes. They are predominantly employed in agriculture and practice jhum cultivation.
Ponzi ponzi lai chai aya chi ngai ang na di le shai ponzi. A 12-kilometer uphill drive from Longdin will bring you to the village of Nyausa, a traditional village of Wancho tribe who still live here in traditional tribal houses. For the village, 25-year-old Femo Manham is a role model of sorts. A young woman who has not let the challenges of living in a remote tribal village defeat her and who has created a livelihood for herself through the USHA Silai School Progamme. At the age of 21, Femo was married to Noklem Manham. Her husband works at the district treasury office on a contractual basis. The temporary nature of his job and unsustainability of his income prompted Femo to look for other sources of income for the family. Her life changed in 2018 when through a local NGO, Femo joined the USHA Silai School Progamme. सिलाई का स्टार्टिंग जो मतलब सिलाई का इंटरेस्ट मेरा बचपन से था। जब हम स्कूल में पढ़ाई करता था तो स्कूल में ऐसा मशीन था जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया था, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा मोड़ा सिलाई करता था, पर वहाँ पे ट्रेनिंग कराने वाला लोग नहीं था। तो हम लोग जब स्कूल से फ्री टाइम होता था तो सिलता था, पर कंप्लीट सीखने नहीं मिलता था। 2015 में मेरी शादी होने के बाद हम ऐसे ही खेती बाड़ी कर रहा था गांव में ना। उसके बाद में हमने उषा सिलाई ट्रेनिंग जो क्लासिकल ट्रेनिंग हो रहा है वो आइडा का उससे हमको सुनने मिला है। तो हम गांव में खेती बाड़ी कर रहा था, फिर हमको ये खबर मिला तो उस पर हमने अपना नाम दिया। तो आइडा ऑफिस हाँ लॉन्गडिंग आइडा ऑफिस में हमने सिलाई का क्लासिकल ट्रेनिंग किया है और उसी से हमको उषा सिलाई की तरफ से गवर्नमेंट से वो मशीन भी मिला है, तो उसी से हम लोगों को ट्रेनिंग देता है। तो उसके बाद में हम थोड़ा मोड़ा जो सिलाई जो कंप्लीट जो हम उसी से सीखने मिला, क्योंकि बचपन में इतना कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर 7 डेज़ का जो क्लासिकल ट्रेनिंग हुआ उसी में हम कंप्लीट सीखने मिला, कटाई वटाई कैसे करना है, उस पर हम लोग मशीन रिपेयरिंग कैसे करना है, तो उसी ट्रेनिंग में हम लोग को सीखने मिला। उसके बाद में मशीन भी मिला है हम लोग को उषा की तरफ से, तो उसी मशीन से हम लोगों को ट्रेनिंग किया और जो फिटिंग विटिंग करना था वो सब शुरू किया था। और ट्रेनिंग हमने अभी तक न्योसा ये हम लोग का गाँव में 10 जन लोगों को ट्रेनिंग किया है। बाकी टाउन में अलग अलग गांव से लॉन्गडिंग वहाँ में ऐसा 20 जैसे लोग को ट्रेनिंग किया है। The village panchayat appreciated her work and in order to encourage and boost her enterprise, provided her with more sewing machines. Femo also teaches stitching, and as her classes expanded, she had to shift to a bigger space. She has already taught over 30 students since November 2018 and earns an income of Rs 5,000 every month. Now, she is an inspiration for her students. हम लोग सिलाई स्कूल खोल के थोड़ा कुछ अपना कपड़ा छोटा मोटा भी सिलाएगा और ज़्यादा सकने से दूसरा लोग का भी सिला के देगा, थोड़ा पैसा भी कमाएगा। इसलिए ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग और लॉन्गडिंग में इतना दूर में जाना नहीं पड़ा है। अच्छा को हम लोग इसलिए थैंक्स देना चाहते हैं कि हम लोग इतना दूर भी जाना नहीं पड़ा है, यहाँ वो खुद आके हम लोग को सिखाइए, इसके लिए हम लोग उसको थैंक्स देना चाहते हैं। एक्चुअली हमारा ये गांव जो बहुत रिमोट एरिया में पड़ता है, तो फिर भी गवर्नमेंट का जितना आपका डेवलपमेंट चीज़ आपका वुमेन को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत लेट पहुँचता है, लेकिन फिर भी आपका ये उषा सिलाई का उससे जो ट्रेनिंग्स लोग अभी जो कर रहा है वो बहुत हम लोग अप्रिशिएट करने की चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग कर रहा है, कोई दुकान भी खुद अपना खोल करके भी बैठा हुआ है। तो यहाँ का औरत लोग को बहुत ये इस उषा सिलाई से अपना सेल्फ इनकम करने के लिए बहुत रास्ता शॉर्टकट रास्ता एकदम आसानी से मिला है। Femo manages to save some money as well to be used later for her children. For tribal women like her,
this financial independence is empowering in many other ways as well. सुविधा वही है। अभी यहाँ टाउन से हम लोग का गांव थोड़ा दूर है 12 किलोमीटर, तो बच्चा लोग का स्कूल ड्रेस वगैरह, उसके बाद जो अपना घर का सिलाई विलाई के लिए अभी दर्जी को 10-20 रुपया हमेशा पैसा देके जाना पड़ता था, या फिर हम लोग यहाँ में वो सिलाई करने वाला ही नहीं था, कोई सिलाई सिखाने वाला, तो सब लोग सिलाई के लिए लॉन्ग दिन दौड़ना पड़ता था टाउन में। तो अभी खुद सीख गया, तो ट्रेनिंग में आके कोई लोग सीख लेते हैं अपना घर का, या फिर किसी को जिसके पास पैसे है वो लोग अपना मशीन खरीद के अपना घर का रिपेयरिंग, सिलाई का रिपेयरिंग भी कर लेता है कपड़ा, या फिर किसी आसपास लोग से या बच्चा लोग का स्कूल ड्रेस सब सिला के अपना घर का छोटा मोटा गुजारा जो कर लेता है, मीन्स खर्चा उठा लेता है। तो ये सिलाई उषा लोग को हम अपना तरफ से बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी जो लड़की लोग को दिया है कुछ करने के लिए। In the initial days, my wife always she wanted to be a good tailor, and she wanted to gain more knowledge, acquire more expertise in this tailoring. But she was not able to get the much needed training, by which after getting the training she can get more knowledge, she can become an expert in this profession. But only after joining in USHA, and after the USHA, after giving her training like basic training, then getting exposure, then getting familiar with the persons who know more about the subject. So after the training being given by USHA, she came to know more about how to do all this kind of work, I mean tailoring work. And after getting that training, she started to earn something. Basically, that time both of us was just a village unemployed youth that time. But after getting married, to run a family was so difficult for us. But after gaining all this kind of required training, she started to take up some earnings. Like she, in the colony itself, even in the village itself, she used to do this kind of work. The village women, the village men, they used to come and they used to ask that I need this work. So this cloth has to be the stitch. So please get my work done. So once she got into this business, the family income, she helped me in how to run a family. So our earning from her only, from this work only, there was some earnings in my family. Femo and her tribal students are winning their war against poverty and joblessness through the Silai School, a model that even the government now acknowledges. ये सब बहुत रिमोट एरिया में काम देता है। पर्टिकुलरली आपको कपड़ा छोटा सा पता है तो उसको टाउन में ले जाके सिलाना पड़ता है, तो उसके लिए रिमोट एरिया में ये सब ट्रेनिंग देके स्यूइंग मशीन प्रोवाइड करके अपना से छोटा मोटा चीज़ को सिलाता है, छोटा मोटा रिपेयरिंग को करता है, और करके क्या होता है उसका काम चल जाता है और इनकम भी मिल जाता है, और लोगों के लिए भी अच्छा है और जो वेल ट्रेन लोग के लिए भी अच्छा होता है। Be here when the cold night falls and in the morning light. It's a new beginning in the dawn-lit mountains of Arunachal Pradesh.
Deep inside these forests of West Singhbhum district lies Sirijang village in Bangaon block. Here Prabha Dhanga is busy training villagers on a sewing machine. She isn't just a local tribal woman. She is also a master trainer. यहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पर शादी होके आए तो सब जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही पड़ा। तो बहुत दिक्कत हो रहा था या घर द्वार चलाने में। फिर हम ऐसी सब्जी सब हम लोग खेती करते हैं और इसे बेच के हम लोग या तेल साबुन सब अपना रोजी रोटी चलते हैं। Even though her income from agriculture was not enough, the training she received with the USHA Silai Institute was definitely a turning point in her life. फरवरी महीने में हम लोग को सिलाई के लिए बुलाया गया था, मतलब 7 दिन का। हम लोग गए वहाँ और वहाँ पर मतलब चलो सिलाई होने से सीख लेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा आता था पहले सिलाई, तो सीख लेंगे। तो हम लोग सीखने गए तो वहाँ से हम लोग को मशीन सब मिला। वहाँ पर बताया गया था कि यहाँ से सीखने के बाद तुम लोग भी सिखाओ, जो हम लोग को मतलब गांव देहात में या कमाने के लिए पलायन के लिए जाते हैं वो सब या कम हो, इस तरह से हम लोग को वहाँ पर बताया गया था। तो हम पहले से मतलब मेरा सोच था कि हम भी कुछ करेंगे, सिलाई करके मतलब सिखाएंगे इस तरह का। तो क्या वहाँ जाके थोड़ा क्या प्रोत्साहन मिला कि हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। तो सर लोग वहाँ पर बताए कि तुम लोग को सिलाई क्लास चलाना है, मतलब सिलाई स्कूल। तो इस तरह से फिर हम भी गांव में महिला समूह में हम खबर दिए कि कौन सिलाई सीखना चाहती है, तो वो लोग आए यहाँ पर। तो इससे हम ऐसे करके 12 स्टूडेंट जमा हुआ यहाँ, उसमें 3 पुरुष थे। वो लोग भी मतलब हम लोग भी सीखेंगे और सिलाई करेंगे, इस तरह से वो लोग आए। और अब क्लास चल ही रहा है, तो अभी काम के ये में सिलसिला में बंद है अभी फिलहाल। काम ख़त्म होने के बाद फिर से हम लोग शुरू करेंगे। जी धान कटाई और दाल सब भी, उड़द दाल सब उखाड़ रहे हैं सब। Although most of her students are currently out of working in the fields, Prabha Dhanga says the villagers accepted her initiative wholeheartedly, with even the men coming forward to take advantage of the opportunity to double their income. एक तो सिलाई स्कूल से कुछ इनकम आया और सिलाई भी थोड़ा अच्छा करने सके, और वहाँ पर नया डिजाइन सब सिखाया, बैग सब बना के बेचे 1-2 ठो ऐसे। तो और भी ऐसे करके थोड़ा उसका आमदनी आया, इसलिए थोड़ा बदलाव हुआ, मतलब इनकम ज़्यादा हुआ सिलाई स्कूल तरफ से भी, और सिलाई भी थोड़ा ज़्यादा होने लगा। पहले सर वही हम लोग सब्जी सब खाली बेचते थे ना, तो अभी हम लोग सिलाई करके सब भी बेच रहे हैं, बैग सब बेच रहे हैं। इस तरह से सिलाई से थोड़ा लाभ हुआ, मशीन सब मिला। इसलिए पहले तो मेरा एक ही मशीन था, तो अभी 2 मशीन हो गया, तो हम लोग दोनों जन करते हैं अभी तो। She says that now, with the rise in her income and a change in her lifestyle, she wants more machines. Not just to train other villagers, but to grow her business. सर हम और आगे जाना चाहते हैं, मतलब और सीखने आए और हम और उन लोगों को सिखाएं। और क्या होता है गांव देहात में मशीन खरीदने का पैसा तक नहीं है, तो उन लोगों को हम यहाँ पर अभी लिए हैं भाड़ा में लिए हैं। तो उसमें तुम लोग सिलाई करो रेडीमेड कम से कम, और हम लोग बाज़ार में देंगे। ऐसे मेरा इच्छा है आगे। तुरंत तो ऐसे दुकान नहीं खुल पाएगा ना, इसीलिए हम उन लोगों को जो मेरे यहाँ सिलाई सीखने आती है उन लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग रेडीमेड बना के बाज़ार में दुकान सब में देंगे। थोड़ा मतलब सिलाई ज़्यादा अभी मिल रहा है, अच्छा से सीख लिए हैं, इसीलिए अभी तो नया ये डिजाइन सब आता है ना, तो लोग थोड़ा दिक्कत होता है हमको भी। हम जितना सीखे हैं हम उतना ही सिखा रहे हैं उन लोगों को, इसलिए। और डिजाइन सब सीखने से तो और अच्छा है। गांव देहात में उतना क्या बोलते हैं फीस भी ना नहीं ये होता है, हम मंथली 300 करके सिखाते हैं उन लोगों को। तो टाउन में अगर अच्छा से हम डिजाइन सीख लेते तो और अधिक इनकम होता। Although in this Naxal affected area, running one's own shop
as well as a training school is easier said than done. But Prabha is confident that with more help from USHA, the fate of the tribals and the repetition of the area for its poverty and backwardness can be changed for the better. एक तो मशीन दिया, जो मेरे पास मशीन नहीं था, हम दूसरों का से सिलाई करते थे, और मशीन दिया और क्या ऑनलाइन क्लास सब होता है, वही सब हम लोग को थोड़ा ये लाभ मिला। हम लोग का अभी फरवरी तक तो काम ही चलेगा खेती बाड़ी का, तो फिर मार्च अप्रैल में उधर फ्री हो जाता है, उस समय हम लोगों को सिलाई सिखाते हैं। सिलाई में ज़्यादा था, लेकिन तुरंत तो नहीं छोड़ सकते हैं सर हम लोग खेती बाड़ी भी। Tribal exclusive USHA Silai School project is encouraging tribal women to emerge from their hard-to-reach terrains, forest-dominant habitats, secluded communities and language barriers. These women are now earning, leading communities, involved in activism and uplifting other women of their tribe.